So, in this video, we are going to solve few assignments on JavaScript Console.log function. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है print your full name inside JavaScript file using console.log function. So, I will come inside my web store and यहाँ पे सेक्शन 1 के ऊपर राइट क्लिक करके मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल एंड मैं फाइल का नाम रखूंगा असाइनमेंट 01 एंड यहाँ पे आई विल सॉल्व द असाइनमेंट नंबर 1. हियर असाइनमेंट नंबर 1 बोल रहा है प्रिंट योर फुल नेम. सो हियर टर्मिनल पे अगर हमें डेटा को प्रिंट करना है तो हम यूज करेंगे console.log फंक्शन एंड यहां पे मैं अपना फुल नेम डालूंगा. Yes, and then I will click on run button and you can clearly see I have printed my full name. Now let's see the second example. Second assignment के अंदर हमें age को print करना है. Rather than creating a new file, I will simply put the answer of this here, and here I will print my age. My age is 45. Again, if you run your program, you can clearly see here, you can see Gandhar Patvardhan, and this is the age. Now, assignment number 3 is saying print your city. Again, I will go inside the same file, and here I will write inside double quotes my city as Nagpur. Again, run your application and you can see Gandhar 45 and Nagpur is printed on your screen. Now, let's check the next assignment. Print your college or company name. Here, I will again use console.log function and using double quotes, I will type the name of my company. Yes. अगेन अगर आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल के अंदर हमने जो भी चीजें console.log फंक्शन को पास की है वो सारी चीजें टर्मिनल पे प्रिंट हो रही है. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट असाइनमेंट. प्रिंट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. console.log and here I will type C++. Let's run this again and you can see here you can see C++ is printed. Now, here at assignment number 6 हमें टर्मिनल पे एक मैसेज को प्रिंट करना है एंड ये मैसेज है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट. अगेन I will come to the next line and here I will print welcome to JavaScript. Yes, and again I will run my program so that you can see terminal पे print हो रहा है welcome to JavaScript. Now let's try to solve one more example. At example number 7, this example number 7 is repetitive. You can skip this. Here we have to solve assignment number 8 जहां पे हमें एक पर्सन के नेम को प्रिंट करना है, एज को प्रिंट करना है एंड सिटी को प्रिंट करना है. बट दिस शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दिस वन. सो हियर टर्मिनल पे डबल कोट्स के अंदर लिखते समय मुझे नेम कोलन स्पेस के बाद राहुल लिखना पड़ेगा. देन अगले लाइन पे एज कोलन 22 लिखना पड़ेगा. लेट्स सी how to solve this assignment. Here I will move to the next line and here I will use console.log function and यहाँ पे मैं लिखूंगा name colon and name is Rahul. Again I will use console.log function and here I will mention age colon 22. And the next thing is we have to print the city. City colon Nagpur. That's all. And if I run my program again, you can see details of Rahul are printed. Now, this is a very nice assignment जहां पे हमें नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके डेटा के रिजल्ट को प्रिंट करना है. अगेन
इन्हें कहा जाता है ऑपरेटर्स, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। बट दीज आर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं स्टूडेंट से कि वो स्टूडेंट को आए। चलिए, असाइनमेंट नंबर 9 इज सेइंग you have to print 25 plus 15 का result. So here I will write console.log 25 plus 15. What JavaScript will do here? JavaScript सबसे पहले दो numbers को add करेगा and add करने के बाद it will print the final result. Let's run this so that we can clearly see that 25 and 15 को add करने के बाद जो आंसर आया वो फाइनल आंसर प्रिंट हुआ है टर्मिनल पे। कभी भी console.log फंक्शन डायरेक्टली डेटा को प्रिंट नहीं करेगा। इट विल ट्राई टू सॉल्व द डेटा फर्स्ट एंड देन इट विल प्रिंट द सिंगल वैल्यू। अगेन console.log is not going to solve your code, JavaScript. So JavaScript will first solve this, and once it gets the single value, it will solve it and it will print on terminal. Now we have to print the subtraction of 10 minus 45. So here I will write console.log and what is the number? 100 minus 45. If you run this again, you can clearly see we got this, we got the result of 100 minus 45. Now we have to print multiplication of 12 and 8. So here I will write console.log and here I will write 12, and for multiplication we have to use a star multiplied by 8. And if you see here, you got the result of multiplication. Same way, I will write here one more time console.log function and I will perform division. 144 forward slash is used for division, and I am dividing 144 with 12. This will give me 12. Yes, these are the solutions. You have to try all these solutions once, and after doing these solutions you will be remembering console.log function forever. Yes.